So, very good afternoon, one and all. ऐकायला येतंय का? होय सर. Yes, sir. So we are about to discuss electronic spectra. And in the last lecture, I told you how to calculate ground state term symbol for given particular electronic system. Okay. So ground state term symbol can be obtained for elemental metal, any element, or any ion, metal ion. Okay. So since we are interested in study the electronic spectra of 3D transition metal elements, so these metal ions will have electronic configuration ranging from D1 to D10, okay, D1, D2, D3 up to D10. So for this particular D system, we have to calculate ground state term symbol. Okay, now why it is necessary to calculate the ground state term symbol? So as far as electronic spectra is concerned, in order to interpret and study the electronic spectra of transition metal elements, what I said, to study the electronic spectra of transition metal ions, we need Orgel diagram. We need Orgel, O-R-G-E-L, Orgel diagram. And to understand Orgel diagram, we should first understand what is meant by ground state term, and then how this ground state term is splitted, then how many peaks are obtained and which peak is corresponding to which transition. That can be easily understood with the help of Orgel diagram. Okay, so in order to study the Orgel diagram, it is necessary to calculate or to learn how to obtain a ground state term for particular electronic system. So let me share my screen.
दिसत आहे का स्क्रीन? हो. Yes, sir. हो सर. पूर्ण दिसत आहे? Oh, हो. sir. Okay, ठीक है. So this is the DN configuration, starting from D1 to D10, and these are the ML values. ये जो मैं यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ, these are the ML values. Okay, so and this is resultant L which has been calculated automatically, and this is resultant S, capital S, and then ground state term. For D1 system, you know electron will be present here. So L for this ML value is 2. So for 2L, the term symbol is D. Later कौन सा यूज करते हैं? D, है ना? कैपिटल L की वैल्यू सिर्फ 2 है, और 2 के लिए लेटर जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो कैपिटल D करते हैं. 0 के लिए S करते हैं, 1 के लिए कैपिटल P करते हैं, और 2 के लिए कैपिटल D करते हैं. So according to this, if this is an unpaired electron, so multiplicity twice s plus 1 or n plus 1 will be equal to 2, isn't it? Number of unpaired electron plus 1 or twice s plus 1. तो s की वैल्यू कितने हैं? हाफ है. तो दोनों भी कर सकते हो आप, है ना? ट्वाइस s प्लस 1, ट्वाइस s प्लस 1 करके देखो आप, आपको मिल जाएगा. वो लास्ट टाइम मैंने बताया था. बराबर है, दो दो कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 2. सो डबल डी इज द ग्राउंड स्टेट टर्म. नाउ इफ यू कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर D9 system, you will obtain same ground state term because number of unpaired electron is 1. Okay, so how it is there? So this is called as whole formalism. इसको, this concept को बोलते हैं whole formalism. So what does it mean by whole formalism? So number of unpaired electron in less than half-filled configuration will behave as similar as number of holes in more than half-filled configuration. Now number of holes means vacancy. Okay, vacancy for electron is termed as number of holes. So this is your half-filled configuration. Clear. Okay. So this is your half-filled configuration. So less than half-filled configuration के लिए जितने electrons present रहते हैं, उतनी holes more than half-filled configuration में present रहते हैं. देखो ये D4 देखो, D4 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं. और D6 opposite to that D6 is there. तो D6 में कितनी वैकेंसीज है? एक, है ना? 1. D6 में कितनी वैकेंसीज है? होल कितने हैं? एक होल है, 2 है, 3 है, 4 है. बराबर है. सो नंबर मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड फर्दर दैट हैज बीन कंसिडर्ड एज ए होल. So there is a vacancy for one electron. So this is one hole. This is vacancy for another electron, second hole. Vacancy for another third electron, third hole. This is fourth hole. Okay, and these are the number of unpaired electron. So number of unpaired electron in less than half-filled configuration will behave as similar as number of holes in more than half-filled configuration. Hence both of them will give same ground state term. Both of them will give same ground state term. Okay, so D4 system have 4 unpaired electron, whereas D6 system have 4 holes. Therefore both of them will have same ground state term symbol, that is quintet of D. This is called as pentet नाही म्हणायचं, quintet. Okay, quintet D. How see that this is 2 plus 1 3 plus 0 plus minus half. Okay, तो -1 minus +1 -1 cancel हो जाएगा. So net L value, capital L value will be equal to 2. Net capital L value will be equal to 2. समझ में आया? बराबर है ना? इस इलेक्ट्रॉन की 2, इस इलेक्ट्रॉन की 1, इस इलेक्ट्रॉन की
0 और इस इलेक्ट्रॉन की -1. So -1 plus 1 cancel. So net capital L value will be equal to 2. So later D should be used for capital L. Then as there are 4 number of unpaired electrons, so n plus 1 rule के हिसाब से उसकी multiplicity हो जाएगी 5. So quintet, okay. So quintet 5 is the ground state term symbol for the D4 system. Similarly, for D6 system, अगेन पिंटेड 5 इज द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल. आप कैलकुलेट करके देखो, इसके लिए कितने आएंगे, +2 +2 +4, फिर इसके लिए +1 0 -1 -2 है ना. सो -3 4 5 -3 2. सो नेट कैपिटल एल वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 है ना. इसके -3 आते हैं और इसके आते हैं +5. So +5 -3 will be equal to +2. +2 means capital L symbol D is used. Again, since there are 4 unpaired electrons, number of unpaired electrons since they are 4, n plus 1 rule के हिसाब से उसकी multiplicity हो जाती है 5. Okay, so printed quintet D is the ground state term symbol for D4 and D6 system. D4 system have 4 unpaired electron, whereas D6 system has 4 holes. Hence, both of them will give same ground state term symbol. Okay, is it clear? Yes, it should be clear. Then let us consider D1 system. So for D1 system, ground state term symbol is doublet D, as we have already calculated. Then if you consider D9 system, and calculate the ground state term symbol, it will again obtain doublet D. How? Because number of unpaired electrons here are 1. In D1 system, number of unpaired electrons are 1, is 1, and in D9 system it has one hole. D9 system के पास क्या है? There is vacancy for one electron, so one hole is present. Okay, so this one hole is equivalent to one electron. So hence both of them will give same ground state term symbol. If you calculate, you will obtain same thing. See here, +2 +2 +4 +1 +1 +2 +4 +2 +6 हो जाएगा इसका, बराबर है. इसका +2, इसका +2 4, इसका +1, इसका +1 6. ये 0 आएगा, ये -1 -1 -2 और ये -2. -2 और -2 -4 हो जाएगा, और ये -6 +6 -4 will give you +2. So net capital L value will be equal to +2. So since it is 2, later D should be used. Since one unpaired electron is there, n plus 1 rule के हिसाब से 1 plus 1 will be equal to 2, multiplicity will be equal to 2. Okay, so doublet T will be your ground state term symbol. Is it clear? समझ लगा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो D1 सिस्टम D9 सिस्टम हो गया, फिर D4 D6 हो गया. अब आते हैं D2 पे. सो D2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो D8 के लिए भी 2 वैकेंसीज है. देखो D2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा मैं कलर अलग यूज करता हूँ ताकि समझ में आ जाए. ओके, D2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो D8 के लिए भी 2 वैकेंसी है. कहाँ पे है देखो. So here it is one vacancy, one hole. Here it is one vacancy. So since D2 system has 2 electron and D8 system has 2 holes, both of them will give same ground state term symbol. That is triplet F will be ground state term symbol. Now how triplet F ground state term symbol is obtained? Calculate here. ml वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन की कितनी है? +2. इस इलेक्ट्रॉन की कितनी है? +1. +1 +2 +3. सो टोटल यल वैल्यू कितनी आएगी? +3 आएगी. सो +3 यल वैल्यू इज देयर.
Since L value is +3, later F should be used क्योंकि 0 है तो yes, 1 है तो P, 2 है तो D, और अगर 3 है तो F. So F is the term symbol later. Okay. Then since there are 2 electron, so n plus 1 के n plus 1 के 1 rule के हिसाब से, where n is equal to number of unpaired electron, 2 plus 1 will be equal to 3. So multiplicity will be equal to 3. You can calculate by calculating spin value. So इस इलेक्ट्रॉन की हाफ स्पिन, इस इलेक्ट्रॉन की भी हाफ स्पिन, हाफ प्लस हाफ 1. So total capital S value is +1. Okay. So twice S +1 के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो भी उसकी वैल्यू +3 आती है ना. सो ट्रिपलेट इज द मल्टीप्लिसिटी. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कैलकुलेट करो या फिर ट्वाइस एस प्लस 1 के हिसाब से कैलकुलेट करो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक ही मिलने वाली है. ओके. सो ट्रिपलेट एफ is the ground state term symbol. Now, in order to understand the original diagram, it is not necessary to calculate the J value. It is not necessary to calculate the J value. Okay. To study original diagram only. But whenever if it is asked to calculate what is the ground state term symbol alone, ग्राउंड स्टेट टर्म सिम्बॉल समजा एकटच विचारला आहे जो त्याच्या त्याच्या सोबत दुसरं काही नाही विचारलं आहे, त्यावेळेला मात्र तुम्हाला जे व्हॅल्यू लिहावी लागेल, ते कंपल्सरी आहे, अदरवाइज मार्क्स कटतील, लक्षात ठेवायचं. ओके. सो D2 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आ गया ट्रिपलेट F. सिमिलरली फॉर D8 आल्सो ट्रिपलेट F, इजंट इट? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, दैट इज द होल फॉर्मेलिज्म. सो ट्रिपलेट F इज द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल. आप कैलकुलेट करो, घर में करना, यहाँ आएगा. ओके. सो ट्रिपलेट F फॉर D2 एंड D8, डबलेट D फॉर D1 एंड D9, ट्रिपलेट F फॉर D2 एंड D8. ओके. क्विंटेट D फॉर D4 एंड D6. अब बचता है D3 और D7. So for D7 and D3, for D3 and for D7, again you will find same ground state term symbol, that is quartet F. Quartet F. Okay. दोनों के लिए quartet F. Why? Because number of unpaired electrons for D3 are 3, whereas number of holes for D7 system again it is 3. Okay. There is vacancy for 3 electrons in the 3 different atomic orbitals. Hence both of them will give same ground state term symbol. Okay. So what is that ground state term symbol? Quartet F. How it is obtained? For this electron +2, for this electron +1, for this electron 0. So total कितना आएगा? 2 + 1 is equal to 3. So L value will be equal to 3. If L value is 3, later F should be used. Later F should be used. Since there are 3 unpaired electron, N is equal to 3. N is equal to कितना आएगा? 3 आएगा. Therefore N plus 1 कितना होगा? 4. N plus 1 become 4. So hence spin multiplicity will become 4. So to ground state term symbol को कैसे रीड करोगे? Quartet F. Ground state term symbol is read as quartet F. Okay. Then for D5 system, for a D5 system, ground state term symbol is 6 state yes. For a D5 system, ground state term symbol is 6 state yes. क्यों? क्योंकि ये +2, ये -2 कैंसल, ये +1, ये -1 कैंसल, और ये तो 0 है ही, तो कैपिटल L की वैल्यू कितनी आएगी? 0. Since L is equal to 0, later yes should be used. And since there are 5 unpaired electrons, so n plus 1 become 5 plus 1 is equal to 6. Hence multiplicity will be equal to 6. Hence ground state term symbol will be equal to 6 state yes. Okay. Isn't it so simple?
Don't you think it is simple? It is absolutely simple. Okay, थोड़ा आपको focus करना पड़ेगा. अब now once you learn how to calculate ground state term symbol and once you remember which 2D system will have same ground state term symbol, things will be very easy to remember and very easy to study. Okay, तो नेमिंग लक्षात ठेवायचं D1 D9 डबलेट D, D2 D8 triplet F, D3 D7 quartet F, D4 D6 quintet 5. Okay, quintet 5. सॉरी क्विंटेट डी. ओके, इकडून खाली यायचं आणि D9 पासून इकडे वरती चढायचं म्हणजे बरोबर लक्षात राहते. ओके, फर्स्ट लास्ट, सेकंड 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 लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, असं लक्षात ठेवू शकता तुम्ही. ओके, पण ते सोपं आहे, खूप सोपं आहे लक्षात ठेवायला. Now once you remember what is the ground state term symbol, then you have to make sure that you learn some basic of splitting. Okay, so for this purpose I hope you have to remember your crystal field theory, the splitting of d orbitals, splitting of f orbital in octahedral crystal field as well as tetrahedral crystal field. Okay, so do you remember that one? Do you remember the BSc final year chapter? The splitting of d orbital in crystal field, octahedral crystal field. I hope d orbital is Yes, sir. split into two sets, T2g set and EG sets of orbital. Okay, I think f orbital का splitting आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना? तो doesn't matter. Now this ground state term is splitted under the octahedral and tetrahedral crystal field like d orbital. These term symbols are also splitted. Okay, like d orbital or f orbital, these term symbols are also splitted. Okay, so how they are splitted? Have you heard the splitting of s orbital in crystal field? Have you heard the splitting of s orbital in octahedral crystal field? No, isn't it? Why? No, sir. Because s orbital is symmetrical, spherical in shape, so electron density is symmetrical. So ligand कैसे पर भी आने दो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो सेम रहेगा, है ना? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का जो पैरामीटर है, it will be same in every area. Therefore there will be no splitting of s orbital. So since there is no splitting of s orbital in crystal field, octahedral crystal field, there is no splitting of s term. कळलं का मी काय बोललो ते? जसं s ऑर्बिटलची स्प्लिटिंग होत नाही, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होत नाही, त्याचप्रमाणे कॅपिटल एस ची जी ग्राउंड स्टेट टर्म असते त्या टर्मचं सुद्धा स्प्लिटिंग होत नाही. ते काय होतं, फक्त अकॉर्डिंग टू मुलिकन it will be simply transformed to A1G. Okay, it will be simply transformed to A1G. So this yes term, okay, A1G में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है. So since there is no splitting of s orbital under crystal field, there is no splitting of s term as well. Therefore s term is simply transformed to A1G according to Mulligan. Now have you heard the splitting of p orbital? Have you heard the splitting of p orbital in
octahedral or tetrahedral crystal field? No, because since p orbital are symmetrical along the three mutually perpendicular coordinate axes, whatever interelectronic repulsion is produced, that will be same in every axis under octahedral crystal field. बराबर है कि नहीं? So there will be no splitting of p orbital. Okay, p orbital doesn't split into any sets in octahedral crystal field, and since there is no splitting of p orbital, p term is also not splitted. P term is also not splitted. So according to Mulliken, this p term is simply transformed to T1G. T1G, T for triplet, okay, T for triplet and G for G-rate, G for G-rate. So ये क्या terminologies है मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल इतना ध्यान में रखो. So what is the sentence which is to be remembered? The sentence is, there is one-to-one correspondence between the splitting of d orbitals and the splitting of energy terms. Okay, there is one-to-one correspondence between the splitting of orbital and the splitting of ground state term under crystal field. मतलब जैसे ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है उसी प्रकार ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का स्प्लिटिंग होता है, ऐसा उसका कहना है. देयर इज वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द स्प्लिटिंग ऑफ orbitals and the splitting of the terms, energy terms. Okay, so since there is no splitting of s orbital, the s term will not be splitted, it will be simply transformed to a1g according to Mulliken. Since p orbital is also not splitted, there is no splitting of p term, hence the p term is simply transformed to T1G according to Mulliken. Now, if you come to d orbital, so under the crystal field splitting of octahedral complexes, it is splitted into two sets, or tetrahedral complexes, it is splitted into two sets. Okay, which is splitted into two sets. D orbital is splitted into two sets. So since d orbital is splitted into two sets, d capital D term will also be splitted into two sets. जसं d orbital दोन सेट मध्ये स्प्लिट होते, त्याच पद्धतीने कॅपिटल डी ची डी टर्म आहे ती सुद्धा दोन सेट मध्ये स्प्लिट होईल. ओके, तर डी ऑर्बिटल कुठल्या दोन सेट मध्ये स्प्लिट होते, एक आहे T2G आणि दुसरा आहे EG. तर कॅपिटल डी टर्म सुद्धा T2G आणि EG अशा दोन सेट मध्ये स्प्लिट होते. आता इथे डिफरन्स लक्षात घ्या. डिफरन्स असा आहे की डी ऑर्बिटलचा सिंबल हा स्मॉल लेटर आहे, स्मॉल अल्फाबेट आहे. ओके, आणि या डी ऑर्बिटलच्या स्मॉल अल्फाबेट पासून ज्या काही दोन सेट्स ऑफ ऑर्बिटल मिळतात, T2G सेट आणि EG सेट, यांचं पण लेटर रायटिंग हे स्मॉल लेटर मध्ये असतं, EG. ओके, T2G and EG, बराबर आहे. But since this capital D term is there, so whatever splitting you will write this capital splitting T2G and capital EG. Okay, so wherever you are writing capital letters, it means you are discussing about the energy terms, and wherever you are writing small letters, it means you are discussing with the orbital. This has to be remembered. Okay, which should not be confused. या दोघांमध्ये कन्फ्यूज होऊ नका. Is that clear? So there is one-to-one correspondence between the splitting of orbitals and the splitting of ground state term symbol. Since d orbital is split into two sets, T2G and EG, capital D term will also be split into two sets, that is T2G and EG. Okay, देन आपने एफ ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग नहीं पढ़ा होगा, तो अगर आप एफ ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग देखोगे तो एफ ऑर्बिटल विल हैव फोर सेट्स. ओके, एफ ऑर्बिटल के कितने सेट्स रहते हैं, फोर सेट्स. कौन से A2G, सॉरी
3 सेट्स रहते हैं, 3 सेट्स रहते हैं f ऑर्बिटल के। ओके, कौन से A2G, T2G and T1G, A2G, T2G and T1G। तीन मतलब यप ऑर्बिटल किती असतात? 7। तर 7 ऑर्बिटलचे 7 सेट असले पाहिजे, बरोबर आहे. हे सिंगली डिजनरेट आहे ते A2G, म्हणजे हे एक झालं. हे T2G म्हणजे ट्रिपली डिजनरेट, म्हणजे हे 3 झाले. आणि हे T1G म्हणजे अगेन ट्रिपली डिजनरेट, so again 3. So 3 plus 3 plus 1 will be equal to 7. So the d orbital, sorry, f orbitals will be splitted into 3 sets: A2G, T2G and T1G. A2G, T2G and T1G. So since f orbital is splitted into 3 sets, capital F term will also be splitted into 3 sets. What are those 3 sets? Capital A2G, capital T1G and capital T2G. ओके, जितने ऑर्बिटल के स्प्लिट होते हैं उतनी ही ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के सेट स्प्लिट होते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? देन मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी 10 मिनट में, कोई बात नहीं, आप एग्जिट कर लेना. ओके, नो मोर एक्स्ट्रा क्लास विल बी देयर. आफ्टर दैट देर इज अगेन f ऑर्बिटल के बाद अगेन g ऑर्बिटल्स रहते हैं, जो इमेजिनरी है, जो हमने कभी पढ़े नहीं है. तो उसके जो सेट्स है वो कितने रहेंगे? 14 रहेंगे वो ऑर्बिटल, 5, 7 और मेरे ख्याल से A1G, A2G, सॉरी 3, 9 orbitals will be there. Okay, 9 orbitals will be there. So these 9 orbital sets are split into A1G, EG, T2G and T1G. Similarly, this G term will be split into A1G, capital EG, capital T1G, capital T2G. Okay. So since G orbital is split into 4 set, that is small A1G, small EG, small T1G and small T2G, this ground state term, that is G, will also be splitted into 4 sets. What are those 4 sets? A1G, capital A1G, capital EG, capital T1G and capital T2G. Okay, is that clear? These higher sets are not our discussion topic here. ये जो हायर सेट्स है ये हमारे आज के डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, कभी कभार पढ़ लेना आगे जाके. ओके, बस आप जी तक याद रखो. सो डी तक तो याद रखते ही हो, यप को भी याद रखोगे, सिर्फ यप कैपिटल जी को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोई बात नहीं. कैपिटल जी के कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे? 9 ऑर्बिटल्स रहेंगे, बराबर है. यस, पी, डी दो से बढ़ रहे हैं ना सब. यस कितना रहता है? एक ही प्रकार का रहता है. पी कितने रहते हैं? 3 प्रकार के रहते हैं. डी कितना रहता है? 5 प्रकार का रहता है. यफ कितना रहता है? 7 प्रकार का रहता है. और उसी हिसाब से जी कितने प्रकार का रहेगा? 9 प्रकार का रहेगा. So these 9 orbitals will be split into 4 sets. What are those? This singly degenerate A1G, this doubly degenerate EG. So 2 और 1 हो गए, फिर remaining 2 will be triply degenerate. So T1G और T2G. 3 plus 3, total 9. Okay. So in the same way, this capital G term will be split into 4 sets. Is that clear? Is that clear? Hope it is Yes, clear. sir. Now, before studying this orbital diagram, we should consider certain what I say things. What are those certain things? So you have to understand what is meant by electron promotion and what is meant by electron inversion. Okay, इलेक्ट्रॉन प्रमोशन और इलेक्ट्रॉन इन्वर्शन का मतलब क्या होता है?
थोड़ा सा देख लो। तो ये मैं स्टॉप करता हूँ, ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा शेयर करूंगा। नाउ सी, सपोज दिस इज D1 सिस्टम। इन D1 सिस्टम, how will be the electronic configuration? How will be the electronic configuration? T2G and EG, बराबर है। तो ये कितने ऑर्बिटल्स है? 3 है। और ये कितने हैं? 2 है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, बराबर है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट किया, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ से एक्साइट करने के बाद मुझे नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। कौन सा वाला? ये वाला। और ये T2G खाली हो जाएगा, बराबर है। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं ना, सो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एक्साइटेशन होता है, बराबर है कि नहीं? Excitation of valence shell electron takes place from ground state electronic energy level to the next higher electronic energy level, and the amount of energy is absorbed. That amount of energy absorbed lies in UV visible region. Hence, we get absorption spectra in UV visible region under the in the form of this peak. Okay, लैम्बडा मैक्स और इंटेंसिटी के बीच में एक ऐसा पीक्स मिलता है। ओके, उसी को हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो सेम थिंग वी हैव टू कंसीडर, we have to consider electronic excitation. So how the electrons will be excited? So electrons are generally present in d orbitals. That's why we have to understand the excitation of d electron. So this T2G will become empty after excitation and EG will gain 1 electron. EG ला एक इलेक्ट्रॉन मिळेल, बरोबर आहे। आता हा इलेक्ट्रॉन कुठून गेला होता? या ऑर्बिटल मधून गेला होता, बराबर आहे। या ऑर्बिटल मधून इलेक्ट्रॉन वरी गेला ना, येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. So the orbital from which the electron is excited, the orbital from which electron is excited after electronic excitation, after electronic excitation, whatever orbital is obtained, if that orbital is similar to remaining two orbitals, then that type of excitation is called as electron excitation. Hole inversion, excitation. Sorry, electron promotion. The terminology is electron promotion. So the excitation of electron is called as electron promotion. Okay. So this is called as electron promotion. What I said, the orbital from which electron gets excited after excitation, if that orbital is same or similar to remaining two orbitals, any one of the remaining two orbital, then that type of excitation is called as promotion. How? See here, this is one electron. After excitation it becomes empty. So is there any empty orbital? Yes, both of them are empty. So this orbital from which electron gets excited is similar to both of them. That's why it is called as electron promotion. Okay, and if the excitation of electron is occurring according to electron promotion, then whatever the order of splitting of d orbital is there, that same order will be retained in the splitting of d term. मतलब T2G नीचे और EG ऊपर, T2G नीचे और EG ऊपर। ओके,
और दूसरे एक टर्मिनोलॉजी है, जैसे D1 है, D1। तो D1 में क्या होता है, if this, sorry D1 नहीं, D9। सो इट इज D9 ऑर्बिटल में क्या होता है, यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एक, all the electrons are present, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात यामध्ये। आणि इथे 3 इलेक्ट्रॉन असतात, बरोबर आहे। इथे 3 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात। तर आपण म्हणतोय ग्राउंड स्टेट मधून, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल मधून एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल मध्ये इलेक्ट्रॉनचं प्रमोशन करतो। तर आपण काय करणार, हा एखादा इलेक्ट्रॉन घेणार, हा एखादा इलेक्ट्रॉन घेतला आणि याला वरती चढवलं, म्हणजे त्याचं एक्साइटेशन केलं, तर आपल्याला काय मिळेल, एक नवीन प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेल, ओके ना। एक अलग तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जिसमें ऊपर के दोनों ऑर्बिटल्स 4